नंबर 2 पे है रिंग टोपोलॉजी. In ring topology, computers are connected in a ring or circle shape. The signal travels around the loop in one direction and passes through each computer. The recipient of the message receives the message while another computer acts like a repeater to send it to the next computer. The failure of a link or a computer can make the entire network non-functional. ये टोपोलॉजी के टाइप्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है लेक्चर्स में, बुक चैप्टर में. Number 3, star topology. In a star topology, all the computers are connected to a central device called hub or switch. To communicate with any computer, the sender must send information to the hub. Then the hub transmits that information to the destination. The advantages of star topology are easy to set up and easy expansion of the network. Another feature of star topology is that if one link to the hub breaks, only the station using that link is affected, not the whole network. Question number 9 है give one example of LAN और WAN and MAN, यानी ये जो नेटवर्क हैं इनकी एग्जाम्पल दीजिए. तो फर्स्ट वन है लोकल एरिया नेटवर्क LAN. LAN is a group of computer and peripheral devices which are connected in a limited area such as school, laboratory, home and office building. यानी महदूद लेवल के ऊपर लिमिटेड एरिया में, जैसे एक स्कूल के अंदर जितना भी नेटवर्क इस्तेमाल हो या एक ऑफिस के अंदर या घर में, तो ये सब LAN के एग्जाम्पल हैं. यूजफुल रिसोर्सेज like internet access, storage space and printers can be shared through a local area network. It can be built with inexpensive network cables and inexpensive hardware such as hubs, switches, network adapters and network cables. So data and software are also shared through local area network. Next है metropolitan area network. In metropolitan area network, computer network can spread across an entire city, college campus or small region. यानी पूरे शहर में या इसी लेवल के हिसाब से बहुत सारे कॉलेजेस के हों, ज़्यादा बिल्डिंग्स हों, कैंपस हों, या फिर कुछ एक छोटे एरिया को कवर करना हो एक नेटवर्क के थ्रू, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की रेंज होती है इतनी. इट कैन कवर द एरिया ऑफ सेवरल माइल्स एंड मे इंक्लूड मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स ऑफ local area networks. So metropolitan area networks offer very fast communication but they are expensive to establish. यानी ज़ाहिर है कि local area networks से ज़्यादा महंगे होते हैं. So therefore only large business organization or universities set up MAN, यानी metropolitan area network. It also requires security measures to prevent unauthorized access. तो ये आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है सारा ये कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ये वाइड एरिया नेटवर्क इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. वाइड एरिया नेटवर्क हेल्प्स टू कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड कनेक्ट सिटीज, प्रोविंसेस और इवन कंट्रीज. यूजिंग वाइड area network technology, computers may be linked together in different countries using satellites, microwaves or telecommunication links. ये microwaves signal की बात हो रही. Therefore, a large business, research and educational organizations situated at longer distances use wide area network. A wide area network may include multiple metropolitan areas and local area networks. So wide area networks are set up with expensive devices and need some dedicated connections. Question number 10 है how can we measure bit rate and baud rate? Give an example of each. Data rate या bit rate किसको कहते हैं? Data rate is the rate at which data is transferred. It is normally measured in bit per second, but it is the actual binary digit, which is the basic unit of data transmission. Bit can hold either 0 or 1. Binary numbers system है.
Data rate can be ranging from bit per second for smaller values to kilobits per second, यानी ये इसके digits हैं, इसकी speed जो है, and megabytes per second, यानी different range है इसकी, एक सेकंड के अंदर मेगाबाइट हो सकती है या किलोबाइट या बिट. It also called bit rate. Data rate becomes faster when more bits are transferred in 1 second. इन एक सेकंड में जितनी ज़्यादा बिट्स जाएंगी, मतलब यह कि डाटा रेंज जो उसका रेट है ट्रांसफॉर्मेशन का वो बढ़ गया, तेज होगा. बिट रेट टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम सेकंड. सो बिट रेट मालूम करने के लिए बॉड रेट को नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन हमें बिट रेट मालूम हो जाता है. Baud rate. The baud rate is the number of signals transmitted per second, and one signal can represent one or more bits. It is used to describe the maximum change in an electronic signal. For example, if a signal changes 1200 times in 1 second, it would be measured at 1200 baud. Baud rate is used when we want to know the number of signal units transmitted per unit of time second. यानी टाइम का यूनिट ऐसे सिस्टम के तहत सेकंड है. बॉड रेट मालूम करना हो तो बॉड रेट इज इक्वल टू बिट रेट को हम डिवाइड कर देते हैं द नंबर ऑफ बिट पर सिग्नल यूनिट के साथ, तो हमें बॉड रेट हासिल हो जाता है, मालूम हो जाता है. ये टॉपिक्स आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किए हुए हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग.